ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सायकं रघुनाथवितं तं सजीवं साधवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सायकं ललितस्य विशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपे कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। बोनस के बाद से पढ़ना है ना? ओके। Okay, Hare Krishna. Gentlemen, do not for a moment think that my Gurudev wants to put a complete break on the modern civilization, an impossible feat. But let us learn from him the art of making the best use of a bad bargain, and let us understand the importance of this human life, which is fit for the highest development of true consciousness. The best use of this rare human life should not be neglected. As it is said in Srimad Bhagavatam, 11th canto, 9th chapter, 29 shloka, labdhva sudarlabham idam bahu sambhavante manusyam arthadam anityam apihadira turnam yatet na pated anumrityu yavan nihirayasya vishaya khalu sarvatah shyat. This human form of life is obtained after many births, and although it is not permanent, it can offer the highest benefits. Therefore, a sober and intelligent man should immediately try to fulfill his mission and attain the highest profit in life before another death comes. He should avoid sense gratification, which is available in all circumstances. In all circumstances. मतलब कि कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस नहीं है जिसमें साइंस ग्रेटिफिकेशन अवेलेबल ना, क्योंकि कुत्ते बिल्ली को भी अवेलेबल है, जानवरों को भी है। मतलब कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर पॉसिबिलिटी देखी जाए कितनी है ह्यूमन फॉर्म आने की, तो 84 लाख योनियों में से जैसे हेड एंड टेल में हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 1/2, करेक्ट ना? 1/2 हेड डिवाइडेड बाय हेड प्लस टेल, तो ऐसे 1/2 बोल सकते हैं। ऐसे सोचो 84 लाख योनियों में एक ऐसी योनि पाना, मनुष्य योनि, जिसमें भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तो कितनी होगी वो बेसिक? तो 2/84 में 2 इसलिए क्योंकि बोल सकते हैं स्त्री पुरुष करके अगर बोलेंगे तो डिवाइडेड बाय 84 लाख। इतनी ये मतलब प्रोबेबिलिटी है, इतनी संभावना है मनुष्य योनि पाने की, फिर उसमें भी कोई भक्त बन जाए। इसलिए बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन तो हर सर्कमस्टेंस में अवेलेबल है, पर ये जो रेयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिली है, इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। करेक्ट? जी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 10 to power -9 भक्त बनने की। वो और भी रेयर हो जाता है फिर, और फिर उसमें भी वो रेयर हो गया जो सीरियस है उस बात पे, है ना? हाँ, फिर 10 to power -12 हो जाएगा। और फिर उसमें भी वो हो गया जिसे एक्चुअली एक ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर ले मिल जाए जो उसका कान पकड़ के बोले कि चल वहां चल। फिर तो भी 10 to power -15 मुझे नहीं पता कितना होता है। इस तरह से एकदम रेयरेस्ट हो गया। एंड दिस मेक सेंस। जब कृष्णा बोलते हैं भगवद गीता में मिलियंस में एक होता है, मिलियंस में, तो आप देखो
वो है ये तो ही millions of millions में एक है जी. Okay, and yeah, let's let me proceed. continue. Let us not misuse this human life in the vain pursuit of material enjoyment, or in other words, for the देखा sake वर्ड of क्या यूज किया गया, वेन परस्यूट. सिर्फ ये भी नहीं बोल रहे हैं कि परस्यूट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, वेन परस्यूट. प्रभुपाद ने एकदम हेवी लैंग्वेज यूज की है. right. Or in other words, for the sake of only eating, sleeping, fearing, and sensuous activities. The Acharya Dev message is conveyed by the words of Srila Goswami Bhakti Rasamrita Sindhu 1-2-255-256. Anashaktasya vishayan yatharaham upayunjataha nirvanda Krishna sambandhe yuktam vairagyam uchyate prapanchikatayaha buddhaya hari sambandhi वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फाल्गु कथयते. One is said to be situated in the fully renounced order of life if he lives in accordance with Krishna consciousness. सही बात है. Basically, you don't need to take sannyas. You already sannyasi if you are following the principles of Krishna consciousness. Yeah. He should be without. में भी बोले थे एक भक्त को ये बात. इस पे नहीं आप बोलिए. नहीं, मैं बोल रहा था कि जो बात आप बताए अभी, वो प्रभुपाद भी एक भक्त को एक अपने एक लेटर में बोले हैं कि यू आर ऑलरेडी इन संन्यास ऑर्डर. Yeah. He should be without attachment for sense gratification and should accept only what is necessary for the upkeep of the body. On the other hand, one who renounces things which could be used in the service of Krishna under the pretext that such things are material does not practice complete renunciation. Vairagyam falgu kathyate. Yeah. Okay. Who's turn next? Yes, you should do. Prabhuji, may I go? Yes, Prabhuji, yes, please. The purport of these shloks can only be realized by fully developing the rational position of our life. Portion. Rational portion of our life, not the animal portion. Sitting at the feet of the Acharya Deva, let us try to understand from this transcendental source of knowledge what we are, what is this universe, what is God, and what is our relationship with Him. The message of Lord Chaitanya is the message of Lord Chaitanya is a message for the living entities and the message of living world. Lord Chaitanya did not bother himself for the upliftment of this dead world, which is suitably named Mrityaloka, the world where everything is destined to die. He appeared before us 450 years ago to tell us something of the transcendental universe, where everything is permanent and everything is for the service of the absolute. But recently, ये समझ गए ना अपलिफ्टमेंट वाला पॉइंट जो प्रभुपाद बोले हैं, अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस डेड वर्ल्ड means कैसे प्रभु आप क्या बताना चाह रहे हैं उसमें? मतलब यहाँ पॉइंट है ना कि लॉर्ड चैतन्य डिड नॉट बॉदर हिमसेल्फ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस डेड वर्ल्ड. राइट, मतलब sarcastic टोन है इसको लेके, मतलब इसको बताने के लिए. हाँ, अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस डेड वर्ल्ड. जी. यस प्लीज. प्रभु जी कंटिन्यू करें, आप कुछ बताना चाह रहे थे. नो आई एम आस्किंग कि हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्या है इस because this is an important line ना, when Lord Chaitanya did not bother himself for the upliftment of this dead world, which is suitably named Mrityulok, the where everything is destined to die. तो जो material world है, इसके upliftment के लिए चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे. करेक्ट. तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमें स्वर्ग वर्ग ले जाने नहीं आए थे सर, because everything is temporary there. इसलिए प्रभुपाद आके लेके आ रहे हैं ना वो बात कि भाई he came to tell us something of transcendental universe where everything is permanent. तो मतलब अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं आई कि ठीक है यहाँ से हेवनली प्लैनेट्स में चले जाओ, वो एक्चुअली हमें लेना है ट्रांसेंडेंटल यूनिवर्स के लिए. करेक्ट है ना? राइट. ओके, लेट्स प्रोसीड.
He appeared before us 450 years ago to tell us something of the transcendental universe where everything is permanent and everything is for the service of this absolute. But recently, Lord Chaitanya has been misrepresented by some scrupulous peoples, and the highest philosophy of the Lord has been misinterpreted to be the cult of the lowest type of society. Our Acharya Deva, with his usual kindness, saved us from the horrible type of degradation, and therefore we bow down at his lotus feet with all humility. Gentlemen, it has been a mania of the cultured or uncultured society of the present day to accredit the personality of Godhead with merely impersonal features and to stultify him by claiming that he has no senses, no form, no activity, no head, no legs, and no enjoyment. This has also been the pleasure of the modern scholars due to their sheer lack of proper guidance and true introspection in the spiritual realm. All these ambitious things alike, all the enjoyable things should be monopolized by the human society or by a particular class only, and the impersonal God should be a mere order supplier for their whimsical feats. We are happy that we have been relieved of this horrible type of malady by the mercy of His divine grace, Paramhans Parivraja Kacharya Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaj. He is our eye opener, our eternal Father, our eternal preceptor, and our eternal guide. Let us therefore bow down at His lotus feet on this auspicious day. Yeah. Gentlemen, although we are like ignorant children in the knowledge of the transcendence, still His divine grace, my Gurudev, has kindled a small fire within us to dissipate the invincible darkness of empirical knowledge. We are now so much on the safe side that no amount of philosophical argument by the empiric schools of thought can deviate us an inch from the position of our eternal dependence on the lotus feet of His divine grace. Furthermore, we are prepared to challenge the most erudite scholars of the Mayavadi school and prove that personality of Godhead and His transcendental sports in Golok alone constitute the sublime information of the Vedas. There are explicit indications of this in Chandogya Upanishad. Shyama Chavalam Prapadye, Shavalak Shyamam Prapadye. For receiving the mercy of Krishna, I surrender unto his energy Radha, and for receiving the mercy of his energy, I surrender unto Krishna. Also, in the Rig Veda, Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Suryaha Diviva Chakshur Atatam Vishnu Yat Paramam Padam. The lotus feet of Lord Vishnu are the supreme objective of all the demigods. These lotus feet of Lord are as enlightening as the sun in the sky. Yes. The plain truth so vividly explained in the Gita, which is the central lesson of the Vedas, is not understood or even suspected by the most powerful scholars of the empiric schools. Herein lies the secret of Sri Vyasa Puja. When we meditate on the transcendental pastimes of the absolute Godhead, we are proud to feel that we are His eternal servitors. And we become jubilant and dance with joy. All glory to my divine Master, for it is He who has, out of His unceasing flow of mercy, stirred up within us such a movement of eternal existence. Let us bow down at His lotus feet. Yeah. Yes, Ishu. Had he not appeared before us to deliver us from the rude समझ नहीं आ रहा क्या ये boredom नहीं कुछ तो है ये M Thraldom. से start Thraldom लग boredom रहा है ना?
Boredom of this gross worldly delusion. Surely we should have remained for lives and ages in the darkness of helpless captivity. Had he not appeared before us, we would not have been able to understand the eternal truth of sublime teaching of Lord Chaitanya. Had he not appeared before us, we could not even able to know the significance of the first shloka of Brahma Samhita, Ishwaram Param Krishna Sachidanand Vigraha, Adir Govindam Sarva Karanam Karana Karanam. Krishna, who is the God as Govinda, is the supreme Godhead. He has an eternal blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, and he is the prime cause of all causes. Hare Krishna. Personally, I have no hope for any direct service for the coming crores of births of the sojourn of my life. But I am confident that someday or other I shall be delivered from this mire of delusion in which I am at present so deeply sunk. Therefore, let me with all my earnestness pray at the lotus feet of my divine master to allow me to suffer the lot for which I am destined due to my past misdoings, but to leave me have this power of recollection that I am nothing but a tiny servant of the Almighty Absolute Godhead, realized through the unflinching mercy of my divine master. Let me therefore bow down at his lotus feet with all humility at my command. We are moving to the next chapter, chapter 3, looking at the cultural background. Yes, His Grace. India's greatest impersonalist mediated on Lord Krishna and the Bhagavad Gita. Srila Prabhupada chastises impersonalist yogis and swamis, the nominal followers of 9th century teacher Shankara, in this commentary on and the latest meditation on Bhagavad Gita. Fools rush in where angels fear to tread. Whereas Shankara, the greatest of the impersonalists, offers his due respects to Krishna and his book Bhagavad Gita, the foolish say that we need not surrender to the personal Krishna. फिर एक poem है, O Bhagavad Gita, through thy 18 chapters, thou showest upon man the immortal nectar of the wisdom of the Absolute. O blessed Gita, by thee Lord Krishna himself enlightened Arjuna. Afterward, the ancient sage Vyas included thee in the Mahabharata. O loving mother, destroyer of man's rebirth, into the darkness of this mortal world, upon thee I meditate. ये थोड़ा थोड़ा सा सुना रहा है, बाकी तो सिर के ऊपर से जा रहा है. आगे पढ़ देता हूँ, पूरी skip कर देता हूँ इसको. ये ओ लविंग मदर, सॉरी टू इंटरप्ट, ये ओ लविंग मदर किसे मतलब किसको ओबीसेंस दिए इसमें इंक्लूडेड थी इन द महाभारत ओ लविंग मदर? इसका महाभारत के बाद तो फुल स्टॉप दिख रहा है ना, तो ये नया शुरू हुआ है, ओ लविंग मदर, destroyer of man's rebirth, into the darkness of this material world, upon thee I meditate. I think गीता कोई वो गीता बोल बोल रहा रहे है, हैं. Yes, ओ लविंग मदर ना, ओके जो गीता है ना उसी को बोल रहा है. Destroy of mother's rebirth, man's rebirth, तो आदमी का दोबारा जन्म नहीं होगा, उसको destroy कर देते हैं गीता. ओके Okay, yes, David bro. Yes, bro. yes, no, true. तो नहीं है, म्यूट पे तो नहीं है भैया? म्यूट पे तो नहीं है. क्या बोल रहे हो? सॉरी, जी. आपका टर्न. मेरी झपकी लग गई थी शायद. Salutations of thee, O Vyasa. Thou art of mighty intellect, and thine eyes are large as the petals of the full-blown lotus. It was thou who brightened this lamp of wisdom, filling it with the oil of the Mahabharata. But okay, Sripad Shankaracharya was an impersonate
from the materialist point of view, but he never denied the spiritual form known as Satchid Ananda Vigraha, or the eternal, all blissful form of knowledge, which existed before the material creation. When he spoke of Supreme Brahman as impersonal, he meant that the Lord Satchid Anand form was not to be confused with a material conception of personality. In the very beginning of his commentary on the Gita, he maintains that Narayana is the Supreme Lord, is transcendental to the material creation. The Lord existed before the creation as the transcendental personality, and he has nothing to do with material personality. Lord Krishna is the same Supreme Personality, and he has no connection with a material body. He descends in his spiritual eternal form, but foolish people mistake his body to be like ours. Shankara's preaching of impersonalism is especially meant for teaching foolish persons who consider Krishna to be an ordinary man composed of matter. Hari Bol. Yes. Issue proof. No one would care to read the Gita if it has been spoken by a material man, and certainly Vyasadeva would not have bothered to incorporate into the history of Mahabharata. According to the above verses, Mahabharata is the history of the ancient world, and Vyasadeva is the writer of the great epic. The Bhagavad Gita is identical with Krishna, and because Krishna is the absolute personality of Godhead, there is no difference between Krishna and his words. Therefore, the Bhagavad Gita is as worshipable as Lord Krishna himself, both being absolute. One who hears the Bhagavad Gita as is actually hears the word directly from the lips of the Lord. But unfortunately, person says that Gita is too antiquated for the modern man who wants to find out God by speculation or meditation. Right. ये कंटिन्यू करूं मैं पोयम? कर लीजिए प्लीज. I salute thee, O Krishna, O thou who art of the refuge, O ocean-born Lakshmi, and all who take refuge. At thy lotus feet, thou art indeed the wish-fulfilling trees for the thy devotee. Thy one hand holds a staff for driving cows, and thy other hand is raised, the thumb touching मतलब समझ गए ना आप? थाई थाई मतलब हाँ। आपका जी प्रभु बता रहे थे। ओके. आप बता रहे थे प्रभु जी, कुछ कंटिन्यू करिए। अच्छा मेरा आवाज नहीं आ रही है? मैं बोल रहा हूँ थाई का मतलब समझ गया ना? थाई मतलब तुम्हारा या तेरा, आपका, उस टाइप से. Thy one hand holds a staff for driving cows, and thy other hand is raised, the thumb touching the tip of the thy forefinger, indicating the divine knowledge. Salutation of thee, O Supreme Lord, for thou art the milker of the ambrosia of the Gita. Purport भी कंटिन्यू करूं प्रभु? आप कंटिन्यू करेंगे? कर लीजिए प्लीज. श्रीपाद शंकराचार्य explained 26 हो गए हैं उदित प्रो. यस हो गया. ये यूजुअली 25 पे स्टॉप करते हैं ना आप? ओके 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 सॉरी. आप देख लीजिए 26 हो. कल से इसको मार्क कर दीजिए, कल से शुरू कर सकते हैं रिपोर्ट. यस प्लीज. अच्छा है आज का. प्रभुपाद पहले अपने स्पिरिचुअल मास्टर को वेरीफाई किए हैं कि, और ऑब्वियसली स्पिरिचुअल मास्टर का पोजीशन होता है. ओ यस नहीं प्लीज. ओके आई थिंक बाय मिस्टेक हो गया. तो मतलब ऐसा बताया गया कि जीव जन्मांतर ऐसे लड़कता रहता है संसार में, कभी ऊपर कभी नीचे. जैसे पानी में कोई तिनका है, बहाया उसे, वो बहता जा रहा है बहता जा रहा है बहता जा रहा है. कहीं पत्थर की ठोकरें उसको लग रही है, कहीं पे पानी के तेज बहाव आ रहे हैं, कहीं एकदम झरने से ऊपर से नीचे जाके गिरेगा वो, सोचो वो तिनका. और उसी तिनके को कोई ऐसे हाथ आगे करे और अपने हाथ में ले ले और उसे हाथ का सहारा देके बाहर निकाल ले,
तो सारी प्रॉब्लम खत्म। तो ऐसे जीव जो है वो जन्म जन्मांतर तक यहाँ भटकता रहता है, कभी कुत्ता बिल्ली बन के परेशान हो रहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, कभी आदमी बन के परेशान हो रहा है, कभी कुछ डेमिगॉड बन के भी सेम प्रॉब्लम्स हैं। बट फिर यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर इंटरप्ट करते हैं, है ना। स्पिरिचुअल मास्टर अपना हाथ बढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि इस जीव को मैं पकड़ लेता हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर दे हैव दिस एग्रीमेंट, जीव सेज यस आई विल follow what I'm promising, and spiritual master says okay if you are promising I will take you back home, back to Godhead। और फिर वो एक एग्रीमेंट जो है उसके बेसिस पे जीव इस मटेरियल वर्ल्ड को पार जा पाता है, वरना फिर तिनके की तरह जैसे बहते ही जाता है। तो ये अच्छा लगा प्रभुपाद ने जो भी क्लैरिफिकेशन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का किया, वहां से हमारे लिए भी काफी लर्निंग है। मुझे याद आता है एक जो श्री संप्रदाय में वो रामानुजाचार्य के बारे में लिखते हैं कि जैसे एक शेर होता है ना, वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जब कूदता है तो शेर से चिपके हुए जो छोटे मोटे जीव रहते हैं, जैसे शेर के स्किन पे लग जाते हैं ना छोटे मोटे जीव, तो वो ऑटोमेटिक ही एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे चले जाते हैं ऑटोमेटिक, उनको अपना कुछ करना नहीं पड़ता है, ऐसे कुछ भी स्पेशल उनको एंडीवर करना नहीं पड़ा है। अगर उनकी एक काबिलियत है तो वो ये है कि वो शेर से चिपक गए हैं शेर कूदा उस तरफ तो ये भी कूद गए, वैसे तो कोई चांस ही नहीं था कि पहाड़ी पार कर पाते। तो ऐसे ये रोल बताया गया स्पिरिचुअल मास्टर का कि एक डिसाइपल को सिर्फ अपने स्पिरिचुअल मास्टर से बेसिकली अटैच रहना है। तो जब स्पिरिचुअल मास्टर मटेरियल वर्ल्ड छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसेंड कर जाते हैं उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। Okay, so that's all from my side of it, bro. Thank you. Thank you, Guruji. Guruji, you want to add something? No, Prabhuji. I'm already half asleep. Thank you. Thank you, Guruji. Ishu Prabhu, you want to add something? जी वो वाला यही व्यास पूजा के लेके प्रभुपाद भी बता रहे थे ना कि why we feel jubilant and why we dance, always dancing। तो मुझे समझ में आ रहा है प्रभुपाद बताना चाह रहे थे कि no one is teaching how to get out of from this material world। हम normally पूजा पाठ में भी देखते हैं ना कि पंडित वगैरह जो भी पूजा पाठ कराते हैं तो they pray that जैसे स्वर्ग लोग मिले आपको, या मतलब they pray these type of things कि जो material world में exist कर रही है। nobody is praying कि आपका कभी दोबारा जन्म ना हो। और ऐसी चीज बता दी प्रभुपाद ने हमें इस टाइम पे कि ऐसा भी कोई है कि यहाँ से वापस नहीं आना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है। तो दिस इज मतलब हम उसी चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नो वन इज टीचिंग कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं हम, और ऐसी भी टीचिंग्स हैं हमारे लिटरेचर में, वैदिक लिटरेचर में, कि जिसका यूज करके यूटिलाइज करके किसी गाइडेंस के अंदर हम एक्चुअल में वो पाथ अचीव कर सकते हैं। तो दैट इज द रीजन फॉर दैट जुबिलेंसी एंड डांसिंग कि हम इटर्नल एग्जिस्टेंस के लिए हम स्ट्राइव कर रहे हैं अपने, एंड दैट इज द हैप्पीनेस। जो अब रीजन के साथ डांस करने में और मजा आएगा ना। दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि व्हाई वी आर डांसिंग नाउ, दिस इज द रीजन। और या दिस इज व्हाट आई वांट टू ऐड। Thank you, Guruji. Amazing realization, Guruji. Yes, मेरे को I think मेरे साइड से तो अभी कुछ नहीं है और सब कवर हो गया है। Yes, that's all from my side. Okay, so let's stop now, huh? Yes, Guruji. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you for joining. Hare Krishna. Hare Krishna.